राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे. Anyone have question? Anyone, yeah. I have one question. Yeah. I want to know, Dada, why you come here to Mungir Mandir? Why you not stay in Vashana doing bhajan? मुंगेर मंदिर में आप क्यों यहाँ हैं, रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं? बरसाना क्यों नहीं चुना आपने भजन करने के लिए? Here is my Gurudev's ashram and my older god brother is here. This is the only reason that he is here. No, his samadhi is here. He just said his samadhi is also here. That's why I'm here. And Radha Govindas Babaji's samadhi is here. Huh? Anything related with Radha Krishna Leela, Radha Mohan Leela. How to practice Manasi Seva? मानसी सेवा कैसे की जाए? सेवा भजन की प्रेरणा प्रथम अंग है. मानसी सेवा is the first step on the path of bhajan. सेवा बिना भजन पुष्टि नहीं होता, भजन की ताकत नहीं. So without manasi seva, the strength for doing bhajan is not there. गुरु जी जो मंत्र देती है उसके लिए मानसिक सेवा के साथ ही उन मंत्रों को जप करना. So whatever the mantra, Guru mantra is Gurudev giving, so we should chant or we should practice this Guru mantra with manasi seva. मंत्र जप करने की टाइम पे At the time while chanting the mantra, Guru mantra, तो गुरु जी की जितनी सेवा जो कर सकता है उसको उतनी कृपा प्राप्त होता है. and as much Guru seva one can do, he will receive that much mercy from Gurudev. जिसकी जिसकी मंत्र है, पंचतत्व है, राधा कृष्ण है, Different mantras are there, Radha Krishna's, Panchatattva. तो सबको मंत्र जप करने के टाइम पे उनको मानसिक सेवा सबसे श्रेष्ठ बताया गया. So while chanting these mantra, the manasi seva is the greatest one, the highest one. इसी को मानसिक सेवा कहा जाता है. ऐसा मानसिक सेवा करते करते एक दिन अपना सिद्ध स्वरूप सामने आ जाएगा. And while doing this manasik seva, with chanting the Guru mantras, automatically we will be able to see our Swarup. उस टाइम बॉडी से अलग हो जाता है. And at that time, फिर इसमें नहीं रहता. the sadhaka is not in this material body. He is apart from this material body. सिद्ध स्वरूप फिर सामने आ जाता है. फिर सिद्ध स्वरूप नहीं वो मानसिक सेवा होने लगती है. Then this actual form, Jiva actual form is there. Only actual form is there. ये अपना ऊपर निर्भर करेगा जो सिद्ध स्वरूप मानसिक सेवा में कब प्राप्त होगा. ये
हर जीव के अपना अपना भावना के ऊपर निर्भर है। It depends that when one will achieve this Siddha Swarupa, this form, it depends on the mood of disciple, on the mood of devotee, that when he will get this mercy. जितनी अपना चित्त शुद्धि करके एकाग्र करके इस से मानसिक सेवा करेंगे इतना जल्दी उनको इस सिद्ध स्वरूप प्राप्ति होगी। Making yourself internally clean and with full of honesty when you are doing, then soon it is possible that you will be able to see this form. मानसिक सेवा गौड़िया संप्रदाय में विशेष महत्व दिया। In Gaudiya Sampradaya, there is a special role of this Mansik Seva on the path of devotion. लोकनाथ गोस्वामी को देखिए, We have example of Loknath Goswami. सब गोस्वामी लोग की मानसिक सेवा करते थे। तो और- एक दृष्टांत All Goswamis were doing Mansik Seva, but Baba is putting one example of Loknath Goswami Maharaj. उन्होंने ठाकुर सेवा तो कर दिया, अब मानसिक सेवा जब शुरू किया When Loknath Goswami completed Thakur Seva, and when he started this Manasik Seva, तो ठाकुर जी को पहले ही उन्होंने मुकुट पहनाए थे। and in Mansik Seva he put crown on the head of Thakur ji. अब जब माला नहीं पहनाया, माला पहनाने गया तो मुकुट में रोक रहे हैं माला। Then after putting the crown, then he tried to put the garland. But while putting the garland, this garland is touching the crown. नरोत्तम उस टाइम झाड़ू लगाए, Narottam Das Thakur Mahasaya was brooming that time आंगन में झाड़ू था। in the courtyard. नरोत्तम ठाकुर महाशय उस टाइम बोल रहे, गुरु जी पहले आप ठाकुर जी की मुकुट उतार दीजिए, उसके बाद माला पहनाइए। Loknath Goswami was inside Gurudev of Narottam Das Thakur Prabhupada. And the Narottam Thakur Prabhupada Mahasaya was brooming in the courtyard. But from courtyard he said, Gurudev, first you just shift the crown first and then put the garland. नरोत्तम तो झाड़ू लगाए रहे, How it is possible? Narottam Das Thakur Mahasaya was brooming in the courtyard. And Loknath Goswami Mahasaya was inside Thakur Seva, Manasik Seva. नरोत्तम ठाकुर महाशय को कैसे मालूम पड़ा? How he knew this? How Narottam Das Thakur Prabhupada knew this? That what Gurudev is doing in Manasik Seva. मानसिक सेवा तो दिखाई नहीं देता है, ना हाथ से करती है, गोदी से करती है। So Manasik Seva is not the matter of this material body, this material form. Manasik Seva is only possible by this Siddha Swarupa. कोई भी सेवा करे, ठाकुर जी की ध्यान होना चाहिए। Whatever seva one is performing, at that time our mind should be in the lotus feet of Sri Radha Mohan. आप चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे रसोई बनाओ, Whatever you do, चाहे फूल तोड़ो, either you cook or broom or pluck the flowers for seva, any part of seva. निमित्त संकल्प चिंतन राधा कृष्ण के लिए होना पड़ेगा। But all this behind all this seva, the only one goal is there, should be there. Only Radha Mohan. That we are doing for them. This is their service. रसोई बनाओ, चिंतन राधा रानी रसोई बना रहे हैं, हम उनको सहायता करें। While cooking, one should think that Radharani is cooking for Mohan, and we are just helping her. इस भाव लेके
जो कोई रसोई बनाएगा वो मानसिक सेवा ही होगा, वो Definitely, if someone is अलग नहीं होगा। doing this cooking seva, having this kind of meditation, so this seva will be manasik seva completely. मंदिर झाड़ू लगाते लगाते भी वही चिंतन होना चाहिए जो हम ठाकुर जी की सेवा ही कर रहे हैं। While brooming or dusting in the temple, ठाकुर जी की रूपी चिंतन होना चाहिए। only the form of Radha Mohan should be there. I am doing only for them. उनकी This is रूप their कैसा seva. है? ठाकुर जी राधा रानी क्या क्या अलंकार परिधान करती है? And while doing this seva, brooming or dusting or whatever cooking, that we should meditate on Radha Mohan, that how nicely today they are dressed, what they are wearing, how they are looking. हर कर्म में मुंजी की हर कर्म में उन्हीं की चिंतन होना चाहिए। While doing anything, any karma, any seva, always Radha Mohan meditation should be there. इस भाव लेके जो कर्म करती है वो कर्म में उसकी मानसिक सेवा हो जाता है और सिद्ध देह प्राप्ति। Whosoever is doing this kind of seva, while doing seva, meditating like this seva will be counted as manasik seva. And while doing this type of seva continuously, the Siddha Swarupa will evoke. जैसा नरोत्तम केवल तो झाड़ू ही लगाते थे, उनको कैसा सिद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ? The same thing happened with Narottam Das Thakur Mahasaya. He was brooming just in the courtyard. How he got this Siddha Swarupa? उनको कैसे मालूम पड़ा जब गुरु जी माला पहनाए रहे? How he knew that what my Gurudev is doing in Mansik Seva? That he is putting garland. चिंतन करते करते ये आत्मा की चिंतन होता है। चिंतन करते करते आत्मा की एक ही रूप है, अलग अलग नहीं है। While meditating, this material body doesn't meditate. The soul is meditating. जितनी जीव है पृथ्वी में, All jivas are in soul form. एक ही आत्मा है। One soul is there. वृत्ति अलग अलग होता है, भावना अलग अलग होता है। Different mood and different lifestyle is there. ये भावना के अनुसार में वो जीव की गति प्राप्ति है, And सिद्ध स्वरूप प्राप्त हो। And according to one's mood, they are able to achieve this swarupa. जैसा नरोत्तम ठाकुर जी को झाड़ू लगाया था तो कभी ठाकुर सेवा किया ही नहीं है। Narottam Das Thakur Mahasaya never performed this Thakur Seva. Only he is brooding in the courtyard. आत्मा एक ही है, इसलिए गुरु की आत्मा और शिष्य की आत्मा एक हो जाता है। When the meditation and the chintan, the all seva mood is like this, then the Gurudev and disciple become one. केवल गुरु की आत्मा और शिष्य की आत्मा नहीं, आत्मा एक ही है ना, बताया कि भगवान ही आत्मा है, कि भगवान के साथ जीव आत्मा मिलन हो जाता है, फिर उसको सब कुछ दिखाई देगा। When soul meet with super soul and become one with this super soul, then the reason is very clear that a disciple or a devotee is able to see things very clearly. कौन जीव कहाँ क्या कर रहा है वो घर में बच्चे देख सकता है। Who is doing what and where? Just by sitting at one place, it is possible to see everything very clearly. केवल जीव ने राधा रानी किस टाइम लीला कर रहा है, क्या लीला कर रहा है, वो भी उसको दिखाई। Not only about other jivas, what other jivas are doing, other souls are doing. Even what Radharani is doing that time, where she is, what she is doing. A devotee, a disciple is able to see all these very clearly. एक अनंत को जो ब्रह्मांड है, This is very vast universe. हर ब्रह्मांड में राधा कृष्ण महाराज करते And each and every लीला भी करते।
and it is a vast universe, and the different men in different universe. And each and every single universe, Radha Mohan is doing their Leela. तो वो जीव जब राधा रानी के साथ मिल जाता है तो लीला में प्रवेश हो जाता है, यह केवल बॉडी रह जाता है। And when this jiva, while doing all this seva, with this kind of meditation, become one with Radha Rani, then only this material body is here and the soul is with Radha Rani. कृष्णदास बाबा सिद्ध बाबा था ना, One Baba, Krishnadas Baba, was modified Baba. होली की मौसम आया, The time of festival of color, Holi, तो बरसाना से उनकी बहुत दूर है, जहाँ रहता है बाबा। where this Krishna, the Barsana is very far from his place, where he is residing there. उनकी वृद्धावस्था आ गया, And he was very old. अब उनको कोई लीला जैसे राधा रानी कन्हैया के साथ सतीले को लेके होली शुरू किया, कृष्णदास की मन में वही आ गया, दर्शन होने लगा। He was not able to go to Barsana, but at the sitting at his place, he was thinking that now Radharani with her girlfriends, she just started playing Holi with Krishna. Then Baba came in this bhav. भजन पे बैठे तो था, He was just sitting and doing bhajan. उठ के चल दिया, And he just started walking from there. होली खेल रहे हैं राधा रानी, उनके साथ होली खेलना है। Now because Radharani is playing Holi, so I also want to play Holi. कुछ दूर भाग के कुछ दूर गए और गिर गए, And he started from his place to go Varsana. But after walking a little distance, he was an old man and he fell down at one place. एक बॉडी छोड़ के चला गया सीधे सड़क पे। And when he fell down over there, the body was laying over down and the soul gone there. बरसाना पहुंच गया, होली खेल The रहे soul reached Varsana राधा रानी, and playing Holi with Radharani. जम के होली खेला। Played fully, completely, enjoyed in Holi. अब जब वापस होली खेलने के बाद जब वापस आया, When after after playing his complete Holi, when he came back, फिर बाबा पड़ा था बॉडी, उस टाइम बाद उठ के अपना कुटीरा के दिया। the body was there, then from there, he just started walking back to his bhajan kutir. भक्त लोग देख रहे हैं बाबा यही तो था, होली किसके साथ खेल। And when he went back there, then this Baba body was here, he was here. How possible that he played Holi? बाबा बिल्कुल लाल हो गया, Means the body of Baba is completely red with color. उनकी कपड़ा से पानी झर रहे थे, जैसे बरसात में भीग गए ऐसा भीग गए। And the clothes were completely wet with colorful water. और बाबा की पूरा शरीर लाल ही लाल हो गए, कितना होली चला जो उनको पहचाना मुश्किल है। He played so much Holi that he became completely red, dark red, so it was very difficult to recognize him that who is he. ये है मानसिक सेवा की फल। This is the result of Manasik Seva. और फिर भगवान और भक्त अलग होता ही नहीं। While doing this type of seva, there is no difference between devotee and Ishtadev. कौन भगवान है और कौन भक्त है, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। Then at this level it is very difficult to understand by ordinary person that who is bhakta, who is devotee and who is God, who is Ishtadev. इस पर्दे जब तक जीव नहीं पहुंचाता है, जब तक उसको शांति प्राप्त नहीं होने वाला है। Until Jiva doesn't achieve this,
till the real peace doesn't come. हम लोग हर जीव शांति और सुख के लिए भागते हैं। We all jiva are just seeking for peace and happiness. सुख और शांति जब आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन होता है उसी टाइम में ये सुख प्राप्त होता है, आनंद अनुभव होता है। ये आनंद नहीं है, ये परमानंद अनुभव होता है। When the devotee or the disciple becomes one with Ishtadev, means soul and super soul becomes one, then the jiva really feels that this is the real happiness and this is real peace. That is called Paramananda. परमानंद लाभ जो भी हो सकता है Only by doing this type of manasik seva. हर शब्दों को याद रखना पड़ेगा। We have to remember, we have to keep in each and every single word said by Gurudev. गुरु जी जो बात बोल के देते हैं मंत्र और उसको जप करने की जो विधि है, तो हर बात को याद रख के उसको जप करना। Whatever Gurudev is saying while giving Diksha mantra, and whatever the word by word he is saying, and whatever he is instructing to do, we have to all keep in our memory and we have to do as per he said. जो भी लीला शरण एवं सिद्ध स्वरूप प्राप्ति, Then this achieving of this Siddha Swarup, this Leela Swarup is possible. और इसी के नाम है चिंतन। This is called Chintan, meditation, भगवान Sharan. भगवान की चिंतन कैसा होता है? What type of Chintan, meditation of God? गुरु और कृष्ण अलग नहीं है। Guru and Ishtadev. Guru and Radha Mohan, they are not two, they are one. गुरु की जो हम लोग साधारण दृष्टि से देखते हैं, ये गुरु कृष्णेर महंत स्वरूप, मतलब मैनेजर। So why sometimes it happens that we see a Guru in an ordinary human form, but actually it is not like that. Guru is just the representative, is a kind of, means in Hindi it is said Mahanta. गुरु हन कृष्ण एवं राधा। Guru means Radha Mohan together, one form. उन्हीं की चिंतन करने से सब कुछ चिंतन हो जाता है, उनको सेवा करने से सब कुछ खुश हो जाता है। By doing the service of Guru, by doing the all kind of seva of Guru, we are able to please Radha Mohan. जैसे गुरु की आत्मा राधा रानी की आत्मा शायद लीन हो जाता है, फिर गुरु की स्वरूप अलग नहीं रहता। Gurudev's soul and super soul Radharani, they are not two. Because Guru reached at this level where he is not far, he is not away or not separate from Radharani. They are totally one. इस भाव लेके जो भक्त भजन करेगा और चिंतन करेंगे, उनको बहुत जल्दी सिद्ध स्वरूप प्राप्त होगा। Having this kind of faith and belief or this kind of mood, that one devotee or disciple is doing bhajan, definitely soon they will achieve this Siddha Swarupa, this will able to see the form, the real form. तो कृष्णदास बाबा यह तो गिर गए थे, तो उनको शरीर में ये रंग कहाँ से आए? The same thing, Krishnadas Baba fell down while going Varsana.
Then how possible this color came to him, appeared on his body? नहीं वो गए थे, It's not like that. He was there in Varsana. He played Holi. होली खेले, इसलिए उनके शरीर में ये रंग दिखाई। That's why he was full of color. बाह्य और अंतर दो ही सेवा। Two types of seva. Internally and externally. एक शरण के द्वारा होता है और एक बॉडी के द्वारा होता है। External seva is with body, material body, and this internal seva is with at the level of soul. ये चिंतन की सेवा करते करते जब सिद्ध प्राप्त हो जाता है तो ये बॉडी भी चिन्मय हो जाता है। When this meditation, while doing internally, then it becomes one. फिर राधा रानी की शरीर और किंकरी की शरीर अलग होता ही नहीं। So after achieving this Kinkari Swarup, there is no difference between Radharani and Kinkari. एक दिन राधा रानी सखी के साथ जंगल में विहार करते करते अपना घर की तरफ जा रहे। One time Radharani with her girlfriend, she was passing through one jungle and she was going to her house. और कुछ सखी लोग राधा रानी के ढूंढते हुए आ रहे जंगल की तरफ। She was already with some Sakhis, girlfriends, and some girlfriends were looking for Radharani and just coming from towards that side. रास्ता में मिल हो गई। On the way, Radharani met with them. सखी लोग कह रहे राधे तुमको ढूंढते ढूंढते हम थक गए। These Sakhis are saying, those who were not there with Radharani, said, "Oh Radhe, we get tired. We were just looking for you." राधा रानी भी कह रहे हैं हम भी तो तुमको ढूंढ रहे थे। Radharani is also saying, "For the same thing, I was also looking for you. Where you were?" सखी तो है ही ना, पास में हाथ पकड़ लिया राधा रानी सखी को। Sakhi was there and she held the hand of Radharani. देख रहे बुढ़िया करके उसकी चेहरा। Holding the hand of Radharani, one Sakhi is looking very nicely to her face. अब राधा रानी कह रहे हैं और Radharani is saying, तुम किसके पास गए थे? "Where you been?" सखी तो कह रहे तुम किसके पास गए थे? Radharani is saying to Sakhi that where you been, where you were. हम तो कहीं नहीं गए, हम तो आ रहे तुमको ढूंढते हुए। Then Sakhi is saying, "I was not where, not anywhere. I was just looking for you." नहीं तुम झूठ बोल रही हो। Radharani is saying, "No, you are lying. हमारे साथ झूठ बोल रही हो। Just lying to me." बोले हम सही कह रहे, हम अभी घर से आ रहे। And Sakhi is saying, "No, I'm just directly coming from my home." बोले घर से आ रहा है, तुम्हारे गाल में दांत की दाग क्यों है? बोला, "Oh, if you are directly coming from your home, why this teeth mark on your cheek?" बोले मेरी नहीं है। सभी कह रहे मेरी नहीं है, तुम्हारी है। Well, no, this is not mine. This is not on my cheek. This is on your cheek. Sakhi is saying to Radharani. राधा रानी तो कह रहे सभी तुम्हारी गाल पे दाग है, हमारी गाल पे नहीं है। Sakhi is saying, "No, it is not like that. This teeth mark is not on my cheek. This teeth mark is on your cheek. See properly." इसकी मतलब क्या हुआ? Actually, what does it mean? राधा रानी कन्हैया से मिल के वापस जा रहे थे। Just after finishing one meeting with Krishna, Radharani was going back. राधा रानी की गाल में कृष्ण ने कामड़ दिया है, काटा है, और सब सुखी को हो गया। And just Krishna beaten on the cheek of Radharani, and while just Krishna beaten on the cheek of Radharani, but the mark came on each and every single Sakhi. केवल सुखी को नहीं, राधा रानी के
समर्पण होके जो जीव रहेगा उसी की वही दशा होगी This is जो not the राधा matter. रानी के होता है। This is not the matter. This example is not the matter of only the Sakhi girlfriend of Radharani. Those whosoever is become with one with Radharani, it happens with all of them. हम लोग की वही दशा होना चाहिए So जो राधा रानी को होता है, जो सुखी लोग को होता है, It means इसी that- को चिंतन कहा जाता है। it means that our state should be also like this. Our situation should be also like this. That whatever is happening with Radharani is happening with Sakhi, and the same thing is happening with us. ये चिंतन की फल है, ये जो भजन के माध्यम से जो चिंतन किया This जाता है all उसी की फल। this all the result of meditation while doing your bhajan, while doing your chintan. सुखी लोग भी घर पे काम करती हैं लेकिन मन घर पे नहीं है। Definitely Sakhis are working at their home, but really their heart is not there, their mind is not there. तो राधा रानी के अंगों में घुसा हुआ है। They became completely one with Radharani. राधा रानी की चिंतन करते करते राधा रानी और सुखी और गुंजरी और भक्त और गुरु सब एक हो जाते। While doing the meditation of Radharani, the Manjari, the Sakhi, devotee and Guru, all they become one, same as Radharani. इसीलिए कहा था जो कौन भगवान और कौन भक्त फिर कुछ पहचानने नहीं। That's why it is said that after reaching on this kind of stage, it is very difficult. Who is devotee? Who is Ishta? Who is Bhagwan? It is very difficult to say. It becomes one. यही है चिंतन की फल। This is the result of Manasik Seva. This is the result of Chintan, meditation. ये चिंतन करते करते यही दशा प्राप्त होगी। The Jiva really, after doing the deep Chintan, deep meditation, the Jiva gets achieve this kind of stage that his situations also become like this. राधा रानी और सुखी लोग लीला छोड़ के और कुछ करते हैं। Radharani and all these Sakhis, they are only doing Leela, nothing else. कृष्ण साथ लीला छोड़ के उनको और कोई काम ही नहीं। The whole Radharani, Sakhis and Krishna, they are doing only Leela. They have nothing to do else. They are doing only this. गोलोक जो वृंदावन In Golok Vrindavan, उस स्थान में लीला छोड़ के और कुछ होता ही। in Golok Vrindavan, there is not such any place for any other thing except Leela. केवल नृत्य गीत वाद्य बजाना और नृत्य करना और कीर्तन करना। Only dancing, playing some instrument, and doing kirtan. That's it. Only these things are there. आनंद चाहती हैं। The जब Jiva wants bliss. राधा रानी की अंग में रहेगा तो वही आनंद प्राप्त होंगी जो गोलोक वृंदावन में 24 घंटा प्राप्त हो रहा है राधा रानी। So if the Jiva is in the meditation of Radharani, he is able to achieve the same kind of bliss. What the bliss is possible after reaching this Golok Vrindavan, that is possible here also. भौतिक जगत की जो दुख है उसको स्पर्श नहीं करने पाए। And while doing all these practices, the painful situation of this material world, the difficulties of this material world will be not able to touch this devotee. इस शरीर के साथ उस टाइम उसकी कोई संबंध ही नहीं रहता। Because he is so busy in this type of meditation and chintan and bhav that he is not in this body. इस शरीर में सब कुछ भरा है ना, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति। All different disturbances are full of, this body is full of all different kind of disturbances. Lust is there, anger is there, different kind of fatal desires are there. इसकी एक दृष्टांत होता है साधारण। An example is there.
अब जंगल में जाके एक पेड़ की जड़ में बच गया, If someone goes and sit in jungle under the shade of one tree, थक गया और पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। while walking get tired and sit down under the shade of one tree. जंगल में तो हर तरीके की क्रिया होता है, But in jungle is a different place. पेड़ के नीचे तो हर तरीके की क्रिया होता है। And in jungle, if you are going, there are different creatures and insects are also there in jungle. The life of jungle is totally different. तो पेड़ में ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, बड़ा बड़ा। And mostly, the big ants are there, big black ants are there in the trees, in jungle, mostly. आप पेड़ के नीचे जाके हलन दे के बैठ गई, And this person just sat down under the shade of the tree. और चीजा आए कि आपको काटने शुरू कर देगा, कि उसकी रास्ता रोक दिया ना, And just you sat down at the place that the black ant is moving. And when you sat down at his place, the black ant came and started biting you. जितनी कीड़ा है सब आपके ऊपर आके बढ़ जाएगा। Not only these black ants, काटने शुरू many कर other different insects also come and they start biting you. ये जीव की दशा वही है। This is in the material world, this is the situation of Jiva. हर टाइम काट रहा है। All different kinds of difficulties is surrounded and troubling all the time. हर टाइम आपको विचलित कर रहा है। All the time disturbing your mind for small things. इस बॉडी में जब तक आप बॉडी की चिंतन करके बॉडी में ही रहेंगे, ये सब आपको दुख भोगना पड़ेगा। This happens until we are too much attached with this material body. और चिंतन के द्वारा But while meditation and thinking, टाइम आप इस बॉडी की बाहर रहेंगे, उस टाइम आपको आनंद, सुख, परमानंद और राधा रानी so while doing this seva, में बेघुर रहे। while doing this kind of meditation, as long more and more you are in this type of situation, in this type of then you are always with Radha Rani. इसीलिए ये भजन किया जाता है, दीक्षा ग्रहण किया जाता That's है, why और इसीलिए गुरु किया जाता है। That's why this Guru Parampara, the Diksha system is there, Guru Mantras are there. नहीं तो गुरु करने की कोई जरूरत नहीं। Otherwise, there is no need to make Guru. There is no need to take Diksha. ये सब आचरण करने के लिए गुरु की आश्रय, साधु की आश्रय लेना पड़ता है। And all these things like meditation, without the help of Guru, without the help of Sadhu, not possible. That's why we go to our Guru, to go the bona fide people. इनकी पास से आपको ये सब अनुभव होगा और सीखना पड़ेगा, और सीखने की बाद ही ये आनंद प्राप्ति होगा। So after learning by their experiences, learning by their what they did in their life, how much sadhana they did, when one disciple understand and follow the same path what the Gurudev did, then he is able to achieve also the same thing by the grace, by the mercy of Gurudev. बोले ये सब मंत्र और साधन की क्रिया कुछ भी शास्त्र में भी लिखा है। Then one question can come that are these things are written somewhere, these things written somewhere in Shastras, in scriptures? हर मंत्र शास्त्र में लिखा है पिता। All mantras manifested from Shastras. तो शास्त्र देख के आप कर सकते हो। It is possible that just by taking the shelter of Shastras you can do. शास्त्र देख के आप कंठस्थ विद्या कर सकते।
by the help of scriptures. You can learn by your heart, definitely. करने की जो रास्ता है ये तो गुरु की बात, साधु की बात है। But how you will do, this you cannot know. This we cannot know. Only the Guru and Sadhu will show the path, real, how to do really. Only Sadhu and Guru can show you the path, whatever is written in the scriptures. जिसको करने की अनुभव है, जिसने किया है चिंतन, उन्हीं की बात है। Means that who really is experiencing their life, what happened in the meditation. Definitely the who they reached already in their life, who achieved this type of goal in their life, they can only say to you. बोले मंत्र तो सब कुछ विधि तो लिखा है, उनके पास जाने क्या जरूरी है? Then one question comes, then everything is written. All methods are also written, how to do, what to do or what to do not. Why needed to go to Guru? बोले गुरु की, साधु की वाक्य के साथ भगवान की वाक्य चलती है। गुरु नहीं कहता है, ना साधु कहता है। उस गुरु के अंदर, गुरु के रूप में भगवान राधा रानी सिखा रहा है। It is really not a human when speaks. When we go to Guru and Sadhu, and when they say something to us, it is not like that as ordinary human body or ordinary person is saying something. No, this is not like that ordinary person is saying something. Whatever he is saying, his each and every word is the word of Radha Mohan. কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবান অন্তর্যামী গুরু শিখানো হবে। If Krishna give you mercy, really Krishna mercy is coming to you, then inside, the awakening of inside only possible by a bona fide Guru. भगवान डायरेक्ट आके नहीं सिखाते, Bhagwan, God will directly not come to you to teach you. गुरु के माध्यम से सिखा देगा, गुरु के माध्यम से कृपा करेगा, साधु के माध्यम से कृपा He करेगा। teaches us through bona fide personality like Guru, like Sadhu. इस कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र होना। But while achieving this type of mercy, we have to become qualified. पात्र बिना कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। Until this type of qualifications are not there, it is difficult. ऐसा साधारण दृष्टांत है। One simple example is there. बाहर में बहुत वर्षा हो रहा है, It's raining outside a lot, जोरदार वर्षा हो रहा है। very heavy. हमने ले जाके 20 किलो पात्र रख दिया बाहर। So we put a pot, a bucket that contains 20 liter of something, आप ले जाके रख दिए 10 किलो वाला, and two persons are going to put their separate pot. One person poured the 20 liter of the one bucket, and one person is putting the 10 liter of one pot. और एक जन ले जाके 5 किलो वाला एक बर्तन भर, And the another one, the third one, is put the pot that contains 5 liter only. और एक जन 1 किलो वाला बर्तन भी ले जाके, And one person, the fourth one, is just gone, and he just put the pot that contains only 1 liter. It's heavy rain outside. जब वर्षा होके बंद हो गया वर्षा, जब And when finally the rains stopped, हम सब गए बाहर, then all gone to their respectively pots to see. तो सब जिस जैसा जैसा बर्तन रखा सब भरा हुआ। So whosoever put the capable pot means with the capacity. So all these pots are full of as per their capacity. Who put the 20 liter, it is full of this 20 liter of water. Who put 5, it's full of 5.
Who put 10, it's full of 10 liter. And who put 1, it's just full of 1 liter. जो 20 किलो वाला बर्तन धरा और जो 1 किलो वाला धरा, अगर 1 किलो वाला बोले कि हमारी इसमें क्यों कम आया, इसमें भी 20 किलो होना चाहिए था. So at that time, the person who kept the pot contains 1 liter cannot say that why his bucket is full of this 20 liter of water and why this 20 liter didn't come in my pot. तो क्या कैसे मिलेगा? How possible? अब बर्तन भी तो रखा 1 किलो वाला. Because you put just one pot that contains only 1 liter. So now this pot is full of only 1 liter. आपको 20 किलो पानी कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? How you can think about 20 liter? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक कौन है? Who is the master of this vast universe? राधा रानी है. Radharani. राधा रानी की देश में अगर कोई सूखा रहे 1 किलो पानी मिले तो बहुत दुख की बात है. Means the mercy of Radharani is showering day and night. It is full of rain is going on. And if someone says I am still not got anything, how possible? राधा रानी की साधु गुरु वैष्णव की कृपा वर्षा 24 घंटा इतना हो रहा है कि लेने वाला कोई नहीं. The mercy of sadhu, gurus and Radharani is showering all the time. And it is as much that people are less to receive this mercy. हम साधु के पास जाते हैं, दंडवत करते हैं, बाबा हमको कृपा करो. अरे कृपा वर्षा तो इतना हो रहा है, तुम लेने नहीं पा रहे, तो साधु की गलती. One is going to sadhu and one go to Baba. That Baba, give your mercy. And Baba is saying, Hare, mercy is showering. But you are not taking. What I can do? आप पात्र रख दिया 1 किलो वाला, तो आपको 20 किलो पानी कहाँ से मिलेगा? How it is possible you have the pot of just contain 1 liter? How possible that you are crying for 20 liter? आप हम खाने के लिए हर टाइम भागेंगे, ठाकुर जी के लिए 10 मिनट नहीं बैठेंगे, तो कृपा प्राप्त कैसे होगी? We are very punctual at the time of our food, but for a Radha Mohan we are not able to sit for 10 minutes nicely. How it is possible that mercy will come? अगर हर टाइम चिंतन कर्म भी करना पड़ेगा, जो भी वो प्राप्त होंगी. That's why it is important that while doing any kind of seva, susha, anything whatever you are doing for Radha Mohan, we have to just think that we are only doing for Radha Mohan. इसमें कृपा करने वाला को कोई गलती नहीं है, कृपा लेने वाला को गलती है. Now this is not the mistake. Those who are, is Radharani who is distributing mercy. So this is our mistake that we are not able to achieve this mercy. महाप्रभु क्या कहा? What Mahaprabhu is saying. दिहे खाको और बोने था. Where you will stay? Griya Thako, either you stay in house or in jungle. गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ कहा महाप्रभु. The Grihastha Dharma, the virtue of a family life, is the greatest one. लेकिन करना बहुत कठिन है. But it is quite difficult. अभी अभी बताया ना, कि जंगल में जाके बैठ गया और चीचा काटने लगा. Just he said that you get tired and sit down under the shade of one tree and all different kind of insects started biting you. ये संसार में हर टाइम ऐसे काटते ही रहेगा. संसार में So in this material world it will happen like में this. भी इससे ज्यादा काटेगा. And when you are in family life, then these different kind of insect will bite you more rather than sitting in jungle. इसीलिए कीड़ा की काटने की जलन सहन करके भी चिंतन करना पड़ेगा. But you have to tolerate this biting without
leaving your meditation and chintan and this mansik seva. जो भी आप 20 लीटर पानी मिल सके, Then you will deserve this 20 liter of water. There's a mercy of that much. एक नामदेव एक महात्मा था, बहुत सिद्ध महात्मा, Namdev, one saintly person was there. बहुत सिद्ध महात्मा, उनको भगवान हर टाइम उनके साथ चलते ही रहते थे। Always Bhagavan was playing with him, Krishna was playing with him. एक भक्त ने सब साधु को बुलाया घर पे, So one devotee invited all different sadhus at his home. कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, साधु जब एक जगह में होता है सत्संग And होता then this all sadhus gathered at one place and satsang harikatha started. है, और एक लेडीज आया डंडा लेके, And at the same time one lady came with having one stick in her hand हर साधु को पिटाई करने लगी, And she सबको started- एक एक डंडा। and she started beating on the head of each and every sadhu. अब कोई कुछ नहीं कह रहा, And not a single sadhu is saying anything. She is hitting on the head of each and every sadhu and no one is saying any single word. जब नामदेव को पिटाई पड़ी, And when this lady came near to Namdev and she hit और on the वो head, खाली हो गया, गुस्सा हो गया, hit on the head of Namdev Maharaj, then he became angry and stand up. अरे साधु को लिया कि पिटाई कर रहा है, इसलिए साधु को बुलाया। Arey, you invited all the sadhus. And we invited the sadhus are here and you beating all sadhus. तुम कैसा कृष्ण हो, What type of grihastha you are? साधु को बुला के पिटाई कर रहे, अपमान कर रहे। First inviting sadhu and just now beating on their head. अब वो लेडी जो लेडी पिटाई कर रहे थे वो कह रहे यही कच्चा है, And this lady who was hitting on the head of sadhu, when Namdev said this type of thing that why you are beating, then this lady said that this sadhu is not perfect yet. He is imperfect. Means Namdev is not perfect sadhu. ये अभी तो पक्का नहीं हुआ, ये कच्चा है। Still he is not bona fide. There is something missing. He is not able to become a sadhu. जो भगवान के साथ बात करती है वो कच्चा है क्या? Is it possible that Namdev Maharaj is talking and dancing with Bhagavan Krishna? He has no perfection? Is it possible? बोले है ये कच्चा है। Then it is said, yeah, it is possible. बोले बहुत उसके मन में दुख लगा, Namdev Maharaj became very sad तुरंत उसके वहां से चल गया घर, and then he just rushed to his house from there जाके ठाकुर जी के पास पहुंच गया। and just standing in front of these deity and ठाकुर जी भी जाके नालिश करने शुरू कर दिया नामदेव। And then he is starting to sing, talking with Thakurji and saying something to him. आज हमको वो लेडी कच्चा महात्मा क्यों कहा? तुम हर टाइम हमारे साथ बात करते हो और हम कच्चा साधक है क्या? Why this lady said me today? Tell me, give me answer. Now he's talking with his Ishta, his deity, that why she hit me on my head and said that I'm not a perfect sadhu. बोला हाँ तुम कच्चा ही हो अभी। Then Krishna said, yes, you are not still perfect. You are imperfect. बोले तुम पक्का कर दो। Well, then if you think that I'm imperfect, make me perfect. बोले देखो ये कच्चा और पक्का बनाना काम हमारा नहीं है, ये गुरु की है और साधु की है। Then Krishna said, see one thing, this perfection and imperfections are not in my department. This is in the hands, this is in the department of Guru and Sadhus. ये दृष्टांत इसीलिए दिया है, संसार में रह के पिटाई भी खाना पड़ेगा और राधा रानी की The चिंतन भी meaning करना of this पड़ेगा। example is that living in this material world, it is very possible, much possible that this type of situations can come. Means this hitting will be also there on your head. And
while living in the society. And you have to meditate, you have to do the seva and do this bhajan also of the Radharani. आप बीच में भजन नहीं छोड़ सकती, You cannot escape, आप चिंतन नहीं छोड़ सकती हैं। you cannot collapse, आप you छोड़ cannot leave. छोड़ देंगे फिर महाप्रभु की वाणी की रास्ता नहीं कट Then if you leave, if you run away, it means that Mahaprabhu saying नरोत्तम ठाकुर is not महाशय, useful. महाप्रभु ने कहा, Whatever Narottam Das Thakur Mahasaya said, whatever Sriman Mahaprabhu Mahasaya said, संसार धर्म सबसे श्रेष्ठ है, Sriman Mahaprabhu said that the Grihastha, family life is the greatest one. लेकिन एक पिटाई भी खाना पड़ेगा, But this eating is also there. चिंतन भी करना पड़ेगा। And you have to do meditation, you have to do Mansik Seva, you have to do bhajan. इसलिए साधु गुरु वैष्णव पास रहने की जरूरत है। That's why it is very, very, very important to be near with Gurudev, to be near with Sadhu. हर चीज किताब में छपा हुआ है, Everything is there, are there in the scriptures. कोई चीज बाकी नहीं रखा किताब में। Everything is there, everything, nothing is left. If something is missing, no. Everything is written. आप सही आचरण कर रहे कि नहीं कर रहे, ये तो गुरु ही करेगा विचार और साधु ही करेगा विचार। So who will check you? What you are doing wrong, or what you are doing right, how you are doing, how much you are doing, what you are doing. Only Sadhu and Guru will check this. गुरु करने की जरूरत है, सब आदमी गुरु कर रहा है, हम भी कर लिया। It is not like that all are going to Guru, taking Diksha. By just looking all this, I also take Diksha, okay? आचरण कुछ किया नहीं, But only Gurudev is there, but not in practically nothing done. न भजन की टाइम पर भगवान की चिंतन करी, Not at the न time of bhajan. गुरु की चिंतन करी, Bhajan is there, no meditation, न no Gurudev meditation, भगवान की रूप की चिंतन करी। neither the form of Radha Mohan, meditation of the form of Radha Mohan is not there. भगवान की लीला, गुण, रूप और धाम, So, Radha Mohan's Leela, Roop, the form, Gun, the qualities, and the place where they did perform their Leela. ये सब चिंतन करना चाहिए। All we should meditate. भगवान की धाम कैसा है, What is how is the place? Means how is the Dham भगवान where क्या Krishna क्या did, लीला किया, where he performed all Leela pastime? What भगवान type की of Leela he रूप कैसे, performed? How he is looking, तो कैसे चलती है, how he is walking, कैसा बोलती है, how he is talking, उनके स्वभाव कैसा है, what is his nature, ये सब how चिंतन soft he is. करेंगे। Everything we have to meditate. भजन के माध्यम से ये सब चिंतन होगा। While doing bhajan, we can do this. जब भी आप पक्का हो, Then perfection can come. Radhe Radhe Govinda Govinda